Hello, everyone. My name is Adil Kawaja, and I'm an investment advisor specializing in equity investments through mutual funds. I've been working in the investment industry for over the last 10 years, helping investors build long term wealth with disciplined strategies. As we step into calendar year 2026, one thing is very clear. Risk free returns are expected to remain in single digits, most likely in the range of 7% to 9%. However, the good news is this. With moderate risk, there is a high probability of earning double-digit returns in the same year, if the right strategy is followed. In this video, we'll start with the portfolio strategy for 2026, and in the later part, I'll explain why this strategy could work for you and how it aligns with current market conditions. I strongly recommend watching this video till the very end, as it may help you make a more informed investment decision this year. And before we move ahead, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel to stay updated with relevant, practical investment content. Now, let's begin with the strategy and the calculations. So here is the portfolio strategy recommendation for the retail clients. So let's assume कि अगर आपके पास 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 1 करोड़ रुपया, तो उसकी जो स्ट्रेटजी होगी, मेरी जो रिकमेंडेशन होगी, दैट 40% वुड गो टूवर्ड्स द स्टॉक इक्विटी फंड्स एंड 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इनकम ग्रोथ में आएगी। अच्छा, यहाँ पे इनकम फंड मैं इसलिए कह रहा हूँ और कैश फंड मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में होते हैं, तो द मोस्ट रिकमेंडेड जो ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का, वो इनकम फंड्स होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनकम फंड्स में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी मोस्टली बॉन्ड्स में होती है। सो जब आपके इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो आपके बॉन्ड्स की यील्ड्स में इजाफा होता है, और जिसकी वजह से उसके रिटर्न्स आपको उसकी फंड्स की परफॉर्मेंस में नजर आते हैं। सो 1 करोड़ रुपए के हिसाब से आपकी 40%, दैट इज 4 मिलियन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जाएगी इक्विटी में, एंड 6 मिलियन इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगी किसी भी इनकम फंड में। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपकी जो इक्विटी मार्केट का रिटर्न रहता है थ्रू आउट द ईयर ऑफ 2026, दैट वुड बी 20%। ये कैसे होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। एंड इनकम फंड्स के जो रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट लाइकली टू रिमेन इन द रेंज ऑफ 7 to 9%। तो हमने यहाँ पे 9% के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पे लगाए हैं। सो आफ्टर दी 1 ईयर आपका जो इक्विटी फंड्स का जो वैल्यू होगा, दैट वुड बी 4.8 मिलियन इफ 20% इज द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विटी फंड। सिमिलरली जो आपने 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की होगी इनकम फंड्स में, वहां आपकी वैल्यू हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर 6.5 मिलियन। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका, एज यू कैन सी, 8 लाख रुपए आप लेंगे इक्विटी फंड से, एंड 5,40,000 रुपए आप लेंगे इनकम फंड से। तो आपका जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होगा, दैट वुड बी 1.3 मिलियन। जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी होगी 15% के हिसाब से, 1,20,000 रुपए टैक्स आप देंगे इक्विटी फंड से, एंड 81,000 टैक्स आप देंगे इनकम फंड से। सो हेयर यू कैन सी जो आपकी परसेंटेज प्रॉफिट बनेगी दोनों की कॉम्बिनेशन के बाद, दैट वुड बी 13.40%, एंड दैट इज क्वाइट हाई अगेंस्ट द रिटर्न ऑफ 8% या 9%। सो ये मेरी एक स्ट्रेटजी है। अच्छा, दिस इज द सिनेरियो 1। ठीक है, मेरे पास सिनेरियो 2 में भी है। उसमें हम थोड़ा-सा चेंजेस ये कर सकते हैं कि 60% तो वही सिनेरियो 1 की तरह ये इंटैक्ट रहेगा इनकम फंड्स के अंदर। जो इक्विटी का 40% होगा, इसको हमने 20-20 में ब्रेकअप किया है। 20% आपकी इन्वेस्टमेंट का रहेगा वहीं स्टॉक फंड के अंदर, वो इंटैक्ट रहेगा। रिमेनिंग जो 20% है, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर इन एंड आउट्स, यानी कि किसी भी सर्टेन लेवल पे हम स्टॉक फंड के अंदर एंट्री लेंगे, और सर्टेन लेवल के ऊपर हम स्टॉक फंड से एग्जिट भी लेंगे। इस स्ट्रेटजी का आइडिया ये होता है कि वी एक्चुअली एम टू बीट अप द मार्केट रिटर्न्स। अच्छा, इसमें फिर हमें एक थोड़ा सा रिस्क भी होता है कि हम मार्केट को अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आप देखें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मैंने इक्विटी का वही 20% है, फिक्स इनकम का 9% है, और इन एंड आउट की वजह से अगर हम 25% का रिटर्न बना देते हैं उस 20% के ऊपर, सो एट द एंड ऑफ द ईयर वी कैन अचीव 14.40%। सो 1% का डिफरेंस हमें मिल सकता है अगर हम उस 20% को इन एंड आउट करते हैं। बट
इसमें अंडर परफॉर्मिंग का भी रिस्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो वो लेवल हमारे लिए अच्छा हो, या एग्जिट लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा हो। ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता। देयर इज़ अ रिस्क टू अंडर परफॉर्म द मार्केट एज़ वेल। सो लेट्स अज्यूम कि अगर हम वो 25% नहीं लगाते, हम 17% अचीव करते हैं। दैट इज़ कि हम मार्केट को अंडर परफॉर्म कर लेते हैं इस एंट्री एंड आउट से। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि हम मार्केट से एंट्री या एग्जिट लेते हैं, बट मार्केट उस हिसाब से नहीं चलती, मार्केट फिर चले जाती है और हमें वो एंट्री का टाइम नहीं देती, तो बाज़ औक़ात हम वो रैलीज़ मिस भी कर देते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि हम 17% परफॉर्म करते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न डिक्रीज़ भी हो सकता है। दैट वुड बी 12.80%। बट अगेन सिंगल डिजिट से ऊपर है, बट हम मार्केट को अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ एन ऑप्शनल सिनेरियो फॉर ऑल द क्लाइंट्स के अगर वो अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए दोनों सिनेरियोज़ में से कोई भी एक सिनेरियो वो कर सकते हैं। So this was my investment strategy recommendation for the year 2026. Now we will be discussing why equity market can give us a 20% return throughout the year. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने सबको सरप्राइज कर दिया है, delivering nearly 120% returns over the past 3 years despite economic crises and political uncertainty. In my analysis, and as per the report of AKD Securities Limited, this rally is far from over. AKD set a KSE 100 target of 263,800 points by December 2026, implying a significant upside from current levels, and I am agreeing with them. This target represents around a 53% total return in PKR terms and roughly 48% in US dollar terms, plus a dividend yield of over 6%. If this projection holds, Pakistan's equity market would cross a historic milestone, reaching US $100 billion in total market capitalization for the first time ever. My target isn't based on speculation, but on solid fundamentals, earnings growth, valuation re-rating, and crucial macroeconomic stability. The single biggest reason for my optimism is the remarkable macroeconomic stabilization observed over the past 2 years. Inflation has dramatically collapsed from above 30% to single digits, which is a significant achievement. The current account has moved close to balance, and foreign exchange reserves have steadily increased, bolstering confidence. The rupee has also stabilized near PKR 280 per dollar, providing much needed predictability. Historically, Pakistan's stock market suffered during macro instability, not due to corporate earnings, but a loss of confidence. Now, for the first time in years, external account risks are contained, IMF discipline is holding, and policy credibility has improved. This robust foundation is critical for sustained equity returns. Interest rates are the next significant driver for the market. I anticipate policy rates will fall into single digits during 2026, while maintaining positive real interest rates of 4 to 5%. Lower rates reduce corporate financing costs, improve earnings visibility, and ultimately increase equity valuations. Concurrently, real returns on fixed income are expected to decline, making equities significantly more attractive compared to T-bills, PIBs, and bank deposits. Historically, rate cut cycles with macro stability have consistently led to equities outperforming almost all other asset classes. The external account is no longer the Achilles heel, a point I've spent considerable time analyzing. Key supports include record remittances, especially from GCC countries, and growth in IT and services exports. Lower global commodity prices and the diversion of expensive LNG imports also contribute positively. I foresee a small current account surplus in FY26 and FX reserves rising toward $25 billion by FY28. The rupee is expected to remain largely stable, depreciating only in line with inflation. Currency stability बहुत ज़रूरी है as it protects USD returns for investors, reduces imported inflation, and improves long-term valuation confidence. Market को uncertainty पसंद नहीं, and I believe political continuity is now a base case. The current coalition government has passed major constitutional amendments, demonstrated institutional control, and maintained IMF alignment. Globally, relations with the US have improved, China remains a key partner, and GCC countries continue to provide support. I believe Pakistan's geopolitical relevance has increased, supporting investment inflows, sovereign credibility, and long-term confidence. Structural reforms are where my thesis shifts from cyclical to long-term.
IMF-led reforms target energy sector inefficiencies, circular debt, and tax-based expansion, including agriculture and services. These reforms aim to solve Pakistan's core problem, low productivity and repeated boom-bust cycles. I believe these changes justify higher valuation multiples, closer to periods of historical stability. Now let's talk numbers. I expect approximately 15% earnings growth across my coverage universe, with dividend yields around 6.3%. Even after strong gains, Pakistan equities trade at a 40% discount to regional peers and offer one of the highest dividend yields in emerging and frontier markets. On top of this, I see a strong chance of Pakistan entering the MSCI Emerging Markets Index in 2026. If this happens, foreign institutional flows could return in size, acting as a major upside catalyst. Of course, risks still exist. Reform fatigue or fiscal slippage could pose challenges. Inflation shocks due to floods or energy prices, geopolitical escalation, or delays in MSCI inclusion are also factors to monitor. However, my base case assumes policy discipline continues, keeping the broader trajectory intact. To summarize, my 263,000 KSE 100 target is based on macroeconomic stability, falling interest rates, and strong earnings growth. It also considers attractive valuations, ongoing structural reforms, and the potential for significant foreign inflows. This is not a short-term trading call, but a strategic medium-term market outlook for Pakistan's equity market. This is it for today. Thank you for watching, and if you have found my analysis helpful, please don't forget to hit like and subscribe button. Thank you and have a nice day.